Hello students, we have started with your SYBSc syllabus for MB222 Air, Water and Soil Microbiology. In this video lecture, we are going to discuss about the waterborne infections. Now, what are waterborne infections? These are the infections and diseases which are caused by the drinking contaminated water, and this water is contaminated by germs or any pathogenic organisms like bacteria, viruses, parasites or protozoas. Okay, so what are waterborne infection? ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जब पर्सन, हेल्दी पर्सन, ये कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करता है. ओके, तब वाटरबॉर्न डिसीजेस होते हैं, वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं. तो कंटेमिनेटेड किस वजह से होता है? देयर आर मेनी रीजंस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, एंड इनटू दैट वाटर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर रिसाइड्स होते हैं, देन द पर्सन, if the person he drink that contaminated water, he or she may lead to the infection or disease. So which are the pathogenic organisms? Pathogenic organisms like E. coli, Campylobacter, Salmonella, Giardia and Cryptosporidium. These are the pathogenic microorganisms which are present in the water that may lead to the disease and infection. Now, this E. coli, actually in the water coliform groups are present. Okay, coliform organisms ये present होते हैं. हम next lecture में study करेंगे कि what are coliforms. Okay, so in this video lecture we are going to see waterborne infection, and in the next lecture also. So now how are waterborne infections spread? किस तरीके से ये infection spread होते हैं, किस तरीके से ये infection distribute होते हैं? Waterborne infections, this happen when animal or human waste containing germs gets into the drinking water. तो ये infection क्यों होता है, spread किस वजह से होता है? अगर water में ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, जिसे हम फीसेस भी कहते हैं, अगर ये डिकम्पोज हो गए या फिर डिपॉजिट हो गए, देन इफ द हेल्दी पर्सन ड्रिंक और कंज्यूम्स दैट वाटर, इट मे लीड टू द इन्फेक्शन. देन इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक पेट्स, लाइट स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स, पोल्ट्री, तो इन सब के वेस्ट अगर ड्रिंकिंग वाटर में चले जाएं, इन सब के फीसेस अगर ड्रिंकिंग वाटर में चले जाए, देन it may lead to the disease. And even some industrial waste is there, some pollutions are there. So ये general reasons हैं जिस वजह से वाटर कंटैमिनेट होता है, वाटर पोल्यूट होता है. और अगर हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाए, हेल्दी पर्सन अगर वो ड्रिंक करे, कंज्यूम करे, डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम द डिसीजेस. Now classification of diseases related to water. तो 4 general classification है of diseases which are best or which are related to water, like waterborne disease, water-based disease, water-washed disease and water-related disease. Let's see one by one with examples what type of disease they cause. First is waterborne disease. Now waterborne means what? These are born in the water. Okay, the disease which are born or the disease which arise in the water is known as waterborne disease. Okay, so this disease are caused by the ingestion of water contaminated by human or animal feces or human or animal waste which contain pathogenic microorganisms. तो ये disease waterborne disease हम कब बोलते हैं? जब ह्यूमन बीइंग कंटैमिनेटेड वाटर ड्रिंक करता है, कंटैमिनेटेड वाटर इंजेस्ट करता है, जिस वाटर में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एनिमल या फिर ह्यूमन वेस्ट प्रेजेंट है. तो ऐसा वाटर जब ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, देन दैट पर्सन में सफर फ्रॉम द इलनेस, दैट पर्सन में सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिसीज.
Okay, so examples of waterborne diseases include cholera, typhoid, amoebic and bacillary dysentery, and many other diarrheal diseases. तो जनरली waterborne diseases में आता है कोलेरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री टाइप ऑफ इन्फेक्शन और डायरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर पर्सन को लूज मोशन होते हैं. ओके, सो डायरियल डिसीजेस लाइक गियार्डियासिस है जो प्रोटोजोआ के वजह से होता है. देन क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस इज देयर विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. कैम्फिलोबैक्टीरियोसिस इज देयर विच इज also caused by the bacteria. Shigellosis, it is the dysentery. Then viral gastroenteritis, which is caused by the virus. Cyclosporiasis, which is caused by the पैरासाइट. अब इन सब के हम सिम्टम्स और ये डिसीज एक्चुअली क्या है ये हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज वाटर रिलेटेड डिसीज. Now water related disease, these are caused by the vectors. Vectors means these are the agents which are responsible to carry the disease, okay, or transfer the disease. It is known as the vectors. तो insect vectors की वजह से cause होता है, especially mosquitoes that breed नियर द कंटेमिनेटेड वाटर. मतलब मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं या फिर दे ले देयर एग्स ऑन टू दैट कंटेमिनेटेड वाटर, तो और वो वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है. ओके, एंड दिस इंसेक्ट्स दे ट्रांसफर दिस कंटेमिनेटेड वाटर दैट आर नोन एज द वाटर रिलेटेड डिसीज. These are not typically associated with lack of access to clean drinking water or sanitation services. इसके एग्जाम्पल्स है डेंगू. डेफिनेटली एग्जाम्पल मॉस्किटो दिया गया है. मॉस्किटो ब्रीड और ले देयर एग्स ऑन टू और नियर दैट contaminated water, and when this contaminated water, if healthy person consumes it, it may suffer from the diseases. Okay, so which diseases like dengue is there, filariasis is there, malaria, onchocerciasis, trypanosomiasis and yellow fever. डेंगू तो हम सबको पता है. फिलारियासिस क्या है? फिलारियासिस इट इज द पैरासाइटिक डिसीज. ओके, इट इज अ पैरासाइटिक डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विथ राउंड वर्म्स, and these are sprayed by blood feeding insects like mosquitoes or black flies are there. Okay, so that are known as the filariasis. next term जो है वो है onchocerciasis. अभी onchocerciasis क्या है? इवन दिस आर इसको हम कॉमनली रिवर ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं. Even it is also a parasitic disease that affects mostly skin and eyes parts. Okay, so this is the parasitic disease of skin and eyes. Then next is trypanosomiasis. It is a sleeping sickness. Okay, इसे हम sleeping sickness भी बोलते हैं. And it is vector-borne parasitic disease where symptoms like fever, headache, joint pain and itching are generally observed. इसे commonly हम trypanosomiasis को ही हम sleeping sickness भी बोल सकते हैं. So these are the water-related disease related to water and spread by the vector which transfers the disease like mosquito. And diseases examples are dengue, malaria, filariasis, etc. Coming to the next category is water washed disease. These are the disease caused by the poor hygienic condition or when the person doesn't maintain any hygienic condition, then it may lead to the disease called as water washed disease. Okay, so this is caused by the poor personal hygiene and skin and eye contact with contaminated water. जब पर्सन की स्किन या फिर आई का कांटेक्ट होता है विद द कंटामिनेटेड वाटर और उसकी हाइजीनिक कंडीशन ये बहुत पुअर है, he or she does not maintain any hygienic condition, that time the person may lead to the diseases like scabies, trachoma, typhus and other flea, lice and tick-borne diseases. Now what is scabies?
Scabies, it is a contagious itchy skin condition caused by the mites. Okay, mite क्या होता है? Mite मतलब छोटे से कीड़े होते हैं. Okay, which spreads the diseases. तो ये इस कंडीशन में स्किन इची होती है and it is caused by the mite, that is known as the scabies. Next is trachoma. Trachoma, it is the bacterial infection which affects the eyes. Okay, trachoma ये bacterial infection है जो generally eyes को cause करता है. Typhus, it is the typhoid fever. And flea, lice and tick-borne diseases. Flea, it is the small wingless insect. Okay, small wingless insect with, we can say, with tough bristles, उसको हम बोलते हैं flea. और कुछ ऐसे डिसीजेस है जो टिक बॉर्न है, जो कीड़ों के वजह से होते हैं. ओके, सो दिस आर नोन एज द वाटर वॉश्ड डिसीजेस. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द पुअर पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन and when the person's areas like skin and eyes come in contact with the contaminated water. Next is water based diseases. These are caused by the parasites found in the intermediate organism living in contaminated water. Okay, so जो contaminated water में, या फिर हम कहेंगे पैरासाइट्स जो कंटामिनेटेड वाटर में रहते हैं, एंड इफ द पर्सन कंज्यूम्स दैट वाटर इट मे लीड टू द डिसीज कॉल्ड एज द वाटर बेस्ड डिसीज. व्हाट इज पैरासाइट? बहुत बार पैरासाइट वर्ड यूज हुआ है. पैरासाइट, दिस आर द प्लांट और एनी एनिमल और इंसेक्ट दैट लिव्स or that depends on the other animal for food. Okay, that is known as the parasite. तो these are the water based diseases. हमने आज 4 कैटेगरीज देखी है: वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर रिलेटेड डिसीज, वाटर वॉश डिसीज एंड वाटर बेस्ड डिसीज. In next lecture we will discuss our further points. Thank you.